I am Saravanan from Swati Group, Coimbatore. On behalf of our PFRC and BCC, I would like to thank the organizers of PFI to invite us to present this presentation to you all. So now, as Sir said, you all know why we are here. We are here to present the journey, the 5 years journey of PFRC, so that we all can collaborate on a national level with each other, collectively take initiatives for the promotion of chicken in one voice across the nation. So before we get into the presentation, I would also like to mention a few challenges we faced in setting up and running a platform like PFRC. We had like 2 failed attempts in the past because we lacked coordination. As producers, we are all good at producing, but in most cases we are very poor at marketing, branding, retailing, and taking collective steps towards awareness. So then we realized we should have a separate platform which would be catering this need, and we'll also have external persons like Ramji and others who can help and support us in taking this forward. So now, as I said, PFRC was formed with 2 core objectives. The first, our parent body BCC was mainly catering the needs of our members, poultry integrators, like fixing prices and other production and marketing related issues. So we were looking to have a broader platform to engage all the stakeholders of the industry and consumers together so that we can have a broader perspective. So this PFRC is formed to collaborate with growers, farmers, traders, vets, doctor community, dietitians, and other social influencers who are very important for our chicken promotion. The second objective was to take countermeasures against negative propaganda, which was a very big threat in our area, where there are a lot of negative propaganda about production and consumption of chicken. So now with these 2 objectives, we started the journey in 2019, and it's almost now. Good afternoon everybody. अभी मेरे सामने 2 challenges हैं. पहला है, when I stand on this stage, I am getting reminded of yesterday night. So I feel like dancing only, not doing presentation. Second is, Saab has requested me to speak in Hindi. You see, I come from Tamil Nadu. तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा हिंदी में ज़्यादा बात करने के लिए. अगर उसमें कुछ गलत है तो क्षमा कीजिए, क्योंकि मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है, फिर भी मैं हिंदी में बोलूँगा. So I have these 2 challenges in front of me. Forget the challenges of poultry. My challenge is paramount today. So I will try to make it up in as much Hindi as possible and also in between English. धन्यवाद Poultry Federation of India हमें इधर बुला के ये प्लेटफॉर्म हमको दिया. हम बहुत कुछ काम किए हैं तमिलनाडु में, जैसे साहब ने बताया था. तो मैं एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन के द्वारा मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगा, और आपको जो क्वेश्चंस भी होंगे तो उसको भी हम आंसर करने का ट्राई करेंगे. जस्ट गिव यू एन इंट्रोडक्शन. लक्ष्मण इज अवर चेयरमैन, who's chairman and managing director of Shanti Feeds, which is a major group in Tamil Nadu. आपको जानते ही होंगे. और मिस्टर चिन्नस्वामी, who is the secretary of our organization, both broiler coordination committee और poultry farmers regulatory committee का. और Saravanan is the son of Mr. Chinnaswamy. Now this broiler coordination committee started way back in 1996, and as Saravanan pointed out, ये जो इंडस्ट्री का जो एसोसिएशन था, लाइक ए टिपिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन, और जो 2019 में ये महसूस हुआ कि हमको कुछ और करना पड़ेगा, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे. तो हम 2019 में ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया. नाउ ये जो पोल्ट्री फार्मर्स रेगुलेटरी कमेटी है, दिस हैज गॉट द इंटीग्रेटर्स ऑन वन साइड एंड कंज्यूमर्स. अर्लियर दोनों के बीच में एक प्लेटफॉर्म नहीं था. इंटीग्रेटर्स थे, प्रोड्यूस करते थे, और व्यापारी लोग हैं, और रिटेल है, और कंज्यूमर्स है, लेकिन एक डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स नहीं था. ये जो गैप था उसको ब्रिज करने के लिए हम ये एसोसिएशन एस्टैब्लिश किया. वी आल्सो हैव रोप्ड इन द इंटरमीडिएटरीज, दैट इज द पोल्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स, एंड आल्सो द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स लाइक द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, द FSSI, द हेल्थ डिपार्टमेंट, pollution control. I think our industry is one industry which is regulated by more departments than any other industry. So we have brought all this into our stakeholder engagement programs. We have been doing a lot of work. I wanted to take a look at this data
which is in front of you. Take 10 seconds and take a look at this data and tell me what you make out of this data. If the nation is not healthy, then we cannot produce better. Now, this is also another indicator for us that as an industry, poultry, which produces chicken meat and eggs, is the only solution to take care of this problem in India. I feel somehow we are missing the bigger picture over here. Today we are talking about a glut in the market, prices going down, a lot of meat is in the cold storage, etc. But somewhere, if we are focusing on where we need to focus and address the problem, this is the problem in front of us, which is you have got a huge population which is eating a lot of carbs and less of protein and ending up as pre-diabetics and then graduating to full-blown diabetes, and you've got child obesity. So all these NCDs, as the doctors call it, that is the non-communicable diseases, is a result of what one eats. Now, as an industry, we are not just producing chicken and eggs, but we are actually taking care of the nation's health, and for that I think we all have to be very proud of providing the most important ingredient for the health of the public in this country, which is chicken and eggs. So I think that this is a huge market. You can't find a market like this anywhere in the world. मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ. ये जो बहुत स्लाइड्स आए थे पहले पर कैपिटा कंजम्पशन वगैरह वगैरह, हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन क्या है इंडिया का? पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ चिकन इन इंडिया स्टेट वाइज इट वेरीज. For example, in Tamil Nadu, we have peaked. We are at 12 kgs. National average, okay, 4 to 5. I can see from Dr. Javed's slides, it's somewhere around 4.8 kgs. Per capita consumption. Let me give you another example. You know a country called Taiwan, which is probably the size of Delhi. Half the population of Delhi. You know what is the per capita consumption of Taiwan in chicken? 46 kgs. 46 kgs. Our population base is huge, so obviously it will be less, but we have a huge scope to increase on the per capita. 46 kgs of poultry alone, and they also eat pork and other meats as well. Now, why I am pointing out this data? The healthiest nation in this planet is Taiwan, which means there is a direct correlation between the protein intake and that of the health of that nation. So we have this message with us that you have to increase your per capita consumption, and per capita consumption, by the way, is not easy to increase. जो इतना खाता है उसको नहीं बोल सकते हो इतना खाओ, नहीं हो सकता. और उसके ऊपर हमारा जो belief systems है, cultural differences है, वगैरह वगैरह, so it is very difficult. But there is a way of the poultry producers for the purpose of being abreast of knowledge, skill, technology and market dynamics. We have brought all these elements into this, because if you don't work on the market dynamics, then all that we do will go for a waste. And to engage and collaborate with government and other stakeholders and be the platform for consumer awareness on the benefits of chicken meat and eggs. So our goal is very clear, our vision is specific, and that's what we work with. We have put together this structure because जो भी कार्यक्रम हमको करना है उसका एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए. पहला स्ट्रक्चर पिलर हमने कंस्ट्रक्ट किया वो लीगल का है, देन दूसरा स्ट्रक्चर रिसर्च का है, और कंज्यूमर और स्टेक होल्डर नेक्स्ट 2 पिलर्स. 4 पिलर स्ट्रक्चर हमने शुरू किया. एंड एज फार एज लीगल इज कंसर्न, एज सरवणन वाज पॉइंटिंग आउट, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस हियर, but I think it is a general problem, that negative propaganda. It started and it peaked during the COVID, and then it continued कि जो भी problem है ह्यूमन बींग्स को, हार्ट का प्रॉब्लम हो, लिवर का प्रॉब्लम हो, प्यूबर्टी का प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो, ब्लेम इट ऑन ब्रॉयलर चिकन. ब्रॉयलर चिकन हो गया एक पंचिंग बैग. और व्हाट्सएप का रूमर है, यूट्यूब में डालते हैं और इंस्टाग्राम में डालते हैं, बोलते हैं कि चिकन को हार्मोन इंजेक्शन दिया जाता है, चिकन को स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है, एंड ऑल प्रॉब्लम्स कम्स बिकॉज यू कंज्यूम ब्रॉयलर चिकन. This was the situation we were facing. It was going to a point where it was really damaging. As जावेद साहब ने मेंशन किया कि हमारा बहुत बड़ा चैलेंज था डॉक्टर्स को एजुकेट करने में. So we started working with the IMA to give them some awareness program as to what is the process of broiler production, etc., etc. So with this legal structure, we have taken down 12 websites. We have taken down 12 websites, 15 YouTube channels, and a lot of warning letters sent. Very recently, in Times of India, there was an article, and 2 prominent doctors from Bombay, I don't want to mention the name of the hospital and doctor, very prominent doctors, very carelessly they have said hormone injected birds, broiler chicken is the reason for blah blah blah.
Immediately we sent a warning letter saying that what is this boss, you are a doctor, you represent a major corporate hospital, how can you so carelessly make a remark that chickens are injected with hormones? You produce us the evidence, otherwise we are sending you legal notice. Then the hospital's legal department got in touch with us and said we are looking into it, we are sorry, we don't know how this information came about. My point is that it is not enough if some organization from Tamil Nadu is raising this for an article coming out in Bombay or Delhi. We all should do this. Every single organization in this country representing poultry must send the legal notice and we should put a full stop to it. आप इंडस्ट्री लोग मिलेंगे और कॉन्फ्रेंस करेंगे, टेक इट टू द पब्लिक, ब्रिंग मोर अवेयरनेस टू द पब्लिक. तो हमने बोला कि मैडम करेंगे हम, और आप डिपार्टमेंट से भी हमको सपोर्ट कीजिए. मैडम ने बताया कि जो भी आप कंटेंट बना रहे हो हमको भी भेज दीजिए, हम भी अपना वेबसाइट पे डालेंगे. तो गवर्नमेंट तैयार है, government is ready, so it is our duty and our responsibility to make content and make awareness so that the government will also support us. And from the legal infrastructure, we have also done animal welfare training to all the member organizations in our association, because that's a very important one. See, one professor told me from America कि जो भी problems आप face कर रहे हो इंडिया में, ऐसा नहीं कि ये आपका प्रॉब्लम है, ये तो पूरा दुनिया का प्रॉब्लम है. अमेरिका में भी प्रॉब्लम आता है, अमेरिका में भी लोग बोलते हैं हार्मोन इंजेक्टेड चिकन है. मैंने वेरी रिसेंटली आई वेंट टू ताइवान, उधर एक लेडी ने बताया कि हम चिकन नहीं देते हैं अपनी बेटी को क्योंकि उसमें हार्मोन है. तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. और एक और चीज़ भी बताया कि हमारे और आपके बीच में डिफरेंस क्या है, हम जो भी करते हैं डॉक्यूमेंट करके रखते हैं, आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं. तो हमने शुरू किया एनिमल वेलफेयर गाइडलाइंस का. तो हमने अपना पूरा मेंबर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉइज को 5 सब्जेक्ट्स में, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग ऑफ द बर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी एनिमल वेलफेयर गाइडलाइंस का सब्जेक्ट्स है, उसके ऊपर एक ट्रेनिंग मैनुअल हमने बनाया. वर्ल्ड एनिमल हेल्थ वेलफेयर गाइडलाइंस का डॉक्यूमेंट है, उसको हमने तमिल में बनाया, अंग्रेजी में बनाया, और वो डॉक्यूमेंट रख के हमने ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग करके उनको सर्टिफिकेशन दिया, डॉक्यूमेंट करके रखा. तो अगर कुछ फ्यूचर में कोई पूछेगा कि अगर एनिमल वेलफेयर गाइडलाइंस में ट्रेनिंग हुआ कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो हर एक कंपनी ये करना पड़ेगा. तो हमको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा. जो हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे. और हमने एक और सर्टिफिकेशन बनाया. इतना अच्छा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं. And one of the best protein sources is your broiler chicken with all the biosecurity measurements. The best water is given to the chicken. हमको भी इतना अच्छा पानी नहीं मिलता है, लेकिन चिकन को इतना प्यूरिफाइड पानी मिलती है. और इतना अच्छा हम फोर्टिफाइड फीड बनाते हैं. एक पीडियाट्रिशियन ने हमारा जो फीड का इंग्रेडिएंट्स देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि यू डू सो मच फॉर चिकन फीड. हमको ये इतना दिन ये पता नहीं चलता कि आप इतना करते हो चिकन फीड बनाने के लिए. जो भी हम बोल रहे हैं बच्चों को जो चाहिए अमीनो एसिड्स वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ, ये तो आप माइक्रो मैनेजमेंट करके चिकन को दे रहे हो. ये पीडियाट्रिशियन बताया. पीडियाट्रिशियन कॉन्फ्रेंस में हमने जाके एक प्रेजेंटेशन किया. तो हमने सोचा कि इतना अच्छा हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों ना हम वो एडवर्टाइज करें. तो इसके लिए हमने एक सर्टिफिकेशन भी बनाया, उसको बोलते हैं हम सेफ पी सर्टिफिकेशन. इट इज अ सोर्स ऑडिट फॉर ईटेबल पोल्ट्री. आई विल टॉक अबाउट दैट. सो ये लीगल अम्ब्रेला के अंदर ये सब काम हमने किया है. हम कैसे ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा को टैकल करते हैं. एट द फर्स्ट लेवल हम वो पब्लिशर इंफॉर्मेशन सोर्स करते हैं. हमारा जो टीम है वो पूरा जाके वो कौन है, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कहाँ काम करता है, उसका हिस्ट्री वगैरह पूरा एक इन्वेस्टिगेशन करके हमको एक डॉकेट बना के देगा. तो हम एक वार्निंग लेटर भेजेंगे. वी सेंड दिस वार्निंग लेटर, भेजते हैं हम. बहुत ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, इमीडिएटली दे अपॉलोजाइज, वो कंटेंट रिमूव कर लेते हैं हमारा वार्निंग लेटर से. अगर नहीं होता है तो देन इट प्रोसीड्स टू लीगल एक्शन बाय सेंडिंग ए लीगल नोटिस. केस तो हमने फाइल नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं कि जुडिशियल प्रोसेस जो है बहुत लंबी होती है, और हम भी ये नहीं चाहते हैं कि ये केस के पीछे हम जाएंगे, वो नहीं आएगा. हमारा आदमी को कोर्ट में जाना पड़ेगा और नहीं आएगा. तो ये जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं. हम चाहते हैं कि वो उनका कंटेंट रिमूव कर लें, अपॉलोजाइज कर लें. एंड ऑल्सो मोस्ट पीपल डू इट अनइंटेंशनली. को लिया विच इज़ वैक्सीनेशन, फीड स्टैंडर्ड्स, सैनिटाइज्ड वाटर, डिसीज प्रिवेंशन, एनिमल वेलफेयर एंड बायोसिक्योरिटी एंड रेगुलेशंस. हम सब ये सब करते हैं. एज आई वाज टेलिंग पहले कि हमारा जो इंडस्ट्री है
is regulated by more departments than any other industry. Pollution का, health department का, FSSAI का, animal husbandry का, local government का, तो सबका regulation के अंदर हमको काम करना पड़ता है. And we are compliant to all of them. And all the regulations coming. We have also worked with the health department in Tamil Nadu. तो ये सर्टिफिकेशन हमने बनाया. जैसे साहब ने बताया कि हम को ब्रांडिंग कर सकते हैं. हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये सर्टिफिकेशन बोर्ड पे रखना चाहिए. हर एक रिटेल शॉप के बाहर ये रखना चाहिए. हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, जो भी लैंग्वेज में हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जब कंज्यूमर देखता है उनको पता चलता है कि भाई जो मैं खरीद रहा हूँ ये सेफ है. This product which I am getting and consuming and I am giving to my children is safe. And the next structure is the research जो मैंने बताया. ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. एक चीज हम नहीं करते हैं वो है रिसर्च. कोई इस कंट्री में रिसर्च किया है कि ये चिकन में क्या हो रहा है, कौन खा रहा है, आपका कस्टमर कौन है भाई. कैन यू पुट अ पिक्चर ऑफ योर कस्टमर. उनका एज क्या है, उसमें मेल कितना है, फीमेल कितना है, कौन से एज बैंड में आते हैं, वो कब खाता है, कितने बार खाता है, क्यों खाता है, कोई रिसर्च किया है. दैट्स व्हाट वी लैक. वी नीड बोथ टेक्निकल रिसर्च एंड आल्सो मार्केटिंग रिसर्च. तो हमने दो रिसर्च किया है. एक जो है वो रेड में मेंशन किया हुआ है, ए प्यूबर्टी का सब्जेक्ट. ए प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग बिफोर द एज ऑफ 10. वो 10 साल के अंदर गर्ल चाइल्ड व्हेन शी अटेन्स प्यूबर्टी इट इज कॉल्ड द प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. सो ऑब्वियसली यू नो दैट ब्रॉयलर चिकन वाज साइटेड एज अ रीजन. क्यों है, हार्मोन. हम हार्मोन चिकन को देते हैं और वो चिकन बच्चे खाते हैं तो वो हार्मोन इफेक्ट हो जाता है. तो ये बेसिक प्रॉब्लम था हार्मोन का एंड प्यूबर्टी का. तो हमने बहुत कोशिश किया कि अरे भाई हम हार्मोन नहीं डालते हैं, डाल भी नहीं सकते हैं, साइंटिफिकली नॉट पॉसिबल, कमर्शियली नॉट वायबल, टेक्निकली इट इज नॉट हैविंग एनी साइंटिफिक एविडेंस. तो ये सब हम जो एजुकेट करते हैं वो बहुत मुश्किल रूट है जाके हर एक इंसान को एजुकेट करना. तो इसलिए हमने एक रिसर्च किया और हमने एक बड़ा सैंपल साइज लिया और उनका डाइटरी पैरामीटर्स को देखा और उनका द एज ऑफ मेनार को देखा. कोई भी कॉरिलेशन नहीं था. और उसमें से सैंपल से 3 लड़कियां प्रिकॉशियस प्यूबर्टी वाली थी. तो उनको हम डेटा ड्रिल डाउन करके देखा, वो तीनों वेजिटेरियन है, कभी भी अंडा भी नहीं खाया. तो वी प्रूव्ड एंड दिस रिसर्च वाज मेंशन्ड इन the British journal Drugs Today. It is an international journal, peer reviewed, pure scientific research done by Ramachandra Institute of Higher Studies in Chennai. ये दो स्टडी हमने किया और दूसरा स्टडी हमने किया कंज्यूमर सर्वे. I will talk about it. So these are the two research which I am talking about. One is the impact of poultry consumption by adults and females. Analytical study किया हमने. दूसरा किया हमने एक कंज्यूमर स्टडी. है तो बहुत बड़ा पैन इंडिया रिसर्च हमने किया. मोर देन 12,500 सैंपल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इसमें हमने बहुत सारे सवाल पूछे थे कंज्यूमर को और मेजर मोटा मोटा परसेंटेजेस में हमको नंबर्स आपको बताऊंगा. एज, द टॉप एज बैंड एज फार एज द कंज्यूमर इज कंसर्न इज बिटवीन 15 and 25 with an extension up to 35, and 77.7% of all your customers come from urban category. उसमें एक मैसेज है कि हमको रूरल में काम करना पड़ेगा. एंड 47% ऑफ टॉप रीजन वो चिकन क्यों खाते हैं. एक डायरेक्ट सवाल पूछा कि क्यों आप चिकन खाते हैं, उन्होंने बोला वो टेस्ट के लिए, which is the top percentage. And 81.1% of all our customers are from middle class. It's a major finding. And home style consumption ranked the top with about 69.6%. So we have the entire study and all the insights of this study. It will be very useful for the companies so that they can tweak their marketing and other initiatives. So this is the research finding which came in the leading newspaper as well. Now another research which is already there, done by the Veterinary College and Science of Namakkal. There was a comparison done between the country chicken and that of the broiler chicken, and it was found that the superior nutritive value is higher. When you eat anything for taste, then people associate it as something which is not good for your health, and it is pushed to the weekend. Daily नहीं खाते हैं. ये जो नॉन वेज खाने का ये ट्रेडिशन है वो वीकेंड को चला जाता है, संडे. डेली नहीं होता है. ये मैंने ऐड देखा, आपने एक बहुत अच्छा ऐड बनाया कि सेहत का फंडा, रोज खाओ चिकन और अंडा. वेरी गुड, एक्सीलेंट. लेकिन ये नहीं होता है, रोज नहीं खाते हैं लोग खाते हैं टेस्ट के लिए
और जब बाहर जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वीकेंड में जाते हैं, वीकेंड में घर में कुकिंग होता है, तब नॉन-वेज होता है. दैट्स द रीजन वाई. Your egg at least has already reached your breakfast table. Your breakfast table has got egg, but your breakfast table or lunch table does not have chicken. It is pushed to the weekend. Now, your consumption can go up only when people associate having that 100 grams of chicken gives you that 25 grams of protein, gives you your daily requirement of essential amino acids to your body. तब consumption बढ़ेगा. तब तक नहीं बढ़ेगा. Only when people associated with health will they start taking more. And also look at the consumption frequency, which is mentioned, which is very crucial. The consumption frequency, 40% of the people, which is the highest percentage by the way, is once in a week. ये once in a week को अगर आप twice in a week कर सकते हो, तो जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसका डबल करना पड़ेगा. अगर your general population of consuming public starts eating 3 times chicken in a week. I'm not talking about people sitting in this room, okay? Maybe you'll be eating every day, maybe all the 3 times of the day. I'm not talking about us. I'm talking about those people who are living in the village, who are living in semi-urban areas. Now that's the biggest population. If people start taking just one more time, one more 100 grams in a week, just imagine the production levels it has to be. That's where our challenge lies. That's where the per capita consumption lies. By increasing the frequency, you can increase the per capita. Otherwise you cannot increase. So हमने एक ad बनाया thrice a week chicken खाओ करके. So maybe in your next ad campaign you can include that thrice a week at least chicken खाओ and then आओ सेहत बढ़ाओ. So we have done all this. हम ये सब किया है. हमने डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाए, स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम बनाए, डॉक्टर्स वीडियो बनाए. डॉक्टर्स ने खुद वीडियोस इंटरव्यूज दिया है. पीडियाट्रिशियंस, gynecologists, we have approached them, we have educated them, we requested them that please talk about this because we need to educate public. So we have those videos from doctors. We have created newsletters which can be supplied to anyone, and we have created something called a nutrition quiz, which is the latest addition to the kind of initiatives we have done. The nutrition quiz is a QR based one. You just click on that. It is technology driven. It is not difficult to implement. आप क्लिक कीजिए और एक किस पेज में जाएगा, उसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे. यू कैन गिव इट टू एनी स्कूल स्टूडेंट. और स्कूल्स के साथ हम काम करते हैं, तो स्कूल में जाते हैं हम और ये QR कोड देते हैं, बच्चों को बोलते हैं क्लिक करो और क्विज अटेंड करो, इमीडिएटली एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है उनको. वी डिड इट विद अलॉन्ग विद रोटरी क्लब्स इन साउथ इंडिया वेयर इट विल बी साइंड बाय द चेयरमैन ऑफ PFRC एंड द रोटरी गवर्नर. तो हम कैसे भी आपको चाहिए वैसा हम कर सकते हैं. तो एक इमीडिएट उनको एक सर्टिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा. तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड इट हैज गेन्ड गुड ट्रैक्शन. मैं आपको वो लिंक दे दूंगा और वो भी आप कर सकते हैं. वी हैव क्रिएटेड एन FAQ. The first of us that we created an FAQ where it has got all information, जो भी doubts हैं उनके सवाल है. This is one of the programs where we did a doctors conference where our chairman participated. We did the traders event where we presented the safety certification, and government hospitals nutrition awareness seminar we conducted at Coimbatore where we had the dean of the government hospitals coming and attending. It was a beautiful program. So involve more doctors, involve more human doctors, and it will be very useful. They are the brand ambassadors. Nurses, dietitians, doctors, they are our brand ambassadors. We also have an MOU with the poultry, vets in poultry. We have also created a poultry vet panel within PFRC. They will be working on articles, advisory, research, presentations, etc. That's the latest initiative which we have done. So we have done PFRC content, social media influencers platform we have created, and promote third party social media content, and we have created about 100 recipe videos. अच्छा ठीक है, चिकन खाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो इसलिए हमने रेसिपी वीडियोस भी बनाया. 100 रेसिपीज है, तो हम वो भी हम भेजेंगे, तो दैट कैन बी सर्कुलेटेड. एंड वी हैव आवर यूट्यूब चैनल फुल्ली फंक्शनल. वी हैव आवर फैंटास्टिक वेबसाइट, and we have conducted all kind of self-regulatory programs for the traders, producers, and everybody in the chain. So this is the summary of what we have done from PFRC. That is, we have created about more than 600 posters, animated videos, documentary videos, social awareness, recipe videos, train magazine, and all kind of initiatives we have done. Before I end my presentation, I wanted to say my thank you. और साहब ने बताया कि हिंदी में ज़्यादा बात करो, तो मैंने सोचा मेरा थैंक यू मैं हिंदी में ही बोलूँगा. ऐसा थैंक यू नहीं बोलूँगा, एक कविता भी मैंने बनाया. कविता सुनाएंगे आप? आई विल कम बैक टू दिस. ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग.
I have just graphically represented it. Today we have a glut from the production pipeline to the consumer universe. If we do all of that, what we have just projected it, then there will be a seamless universe of the consuming public and that of the production, so that there is a pull market instead of the push market. Now this is the current customer profile. As I told you in the beginning, who is your customer? Your customer is between 15 and 25, both gender, urban, once a week, eats for taste, prefers home cooked, and student or employee. This is your customer profile. How do we want our customer to be? This is how our customer should be. It should be both rural and urban, and somebody who eats not once a week but thrice a week and eats for nutrition more than for taste. तो ये तीन चीज को हम लेके फोकस करेंगे, आई थिंक इट विल बी बेटर. ओके, सो एज आई टोल्ड यू दैट वी नीड अ पैन इंडिया वॉइस, वन नेशन वन रेशन, वन नेशन वन इलेक्शन. द सेम वे एक देश एक वॉइस में हमको बोलना चाहिए पोल्ट्री के लिए, तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं. तो यही मेरा थैंक यू है. लेट मी ट्राई एंड रीड दैट. आपने याद किया यही है सम्मान, आपके संग बांटेंगे हर अरमान. आपने याद किया यही है सम्मान, आपके संग बांटेंगे हर अरमान. आभारी है हम इस अवसर के लिए, आभारी है हम इस अवसर के लिए, आपकी मित्रता के इस सुंदर सिलसिले के लिए. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.